तो अब स्टार्ट करते हैं कंपोजिट फंक्शन। एग्जैक्टली। तो कंपोजिट फंक्शन क्या है? कंपोजिट फंक्शन इज ए फंक्शन which is made up of two or more function, which is made up of two or more function। तो अब एग्जैक्टली टू और मोर फंक्शन से ये बना हुआ है। तो कैसे बना हुआ है उसके लिए हम सबसे पहले टू फंक्शन लेते हैं। लेट f is a function defined from a to b such that f of x is equal to y, and g is a function defined from b to c such that g of y is equal to z. Then composition of the function, then composition of the function is defined as gof defined from a to c such that gof of x is equal to z। ये डेफिनेशन है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं एग्जैक्टली ये है क्या। तो एरो डायग्राम से समझते हैं। सपोज देयर इज थ्री सेट a, b and c। now f is a function which is defined from a to b and g is a function which is defined from b to c। now there is an element x whose image is y under the function f, and if y is the element of b, then z is the image of y under the function z। then this y is equal to definitely f of x, and this z is the image of y under g, then g is equal to g of y। then put this y is equal to f of x, so that can be written as g of f of x। now then there is a one function which is defined directly from a to c, and that function is called gof function, and that gof function is defined from a to c, then z is the image of x under the gof. It means this z is also equal to gof of x. It means these two term are identical. It means gof of x is equal to g of f of x। नाउ ये हुआ एरो डायग्राम से। इसको और प्रॉपर वे में फंक्शन एज ए मशीन के टर्म में समझते हैं। सपोज देर इज अ मशीन f, there is a machine f which accept input as x from a and produces output y, and that y is definitely equal to f of x and which belongs to b, and this output of the machine f goes as an input of the second machine g, this second machine g, and this produces the output z, and this is equal to g of y or g of f of x। now there is another function which is made up of the combining these two function। so now there is a function gof whose input is from a and the output is from, definitely this belongs to the third set c। तो अब एग्जैक्टली ये दिख रहा होगा कि f एक फंक्शन है जो a टू b डिफाइंड है, यहाँ पे a टू b डिफाइंड है, और g एक फंक्शन है जो b टू c डिफाइंड है। अब इन दोनों को कंबाइन करके एक सिंगल फंक्शन बनाया गया गॉफ। तो गॉफ फंक्शन कैसे बना, और सिंपल वे में बोले गॉफ मशीन कैसे बना, तो सबसे पहले x इनपुट f मशीन को गया। f मशीन में जो आउटपुट y मिला वो आउटपुट g मशीन की इनपुट में गया, और वो g जो आउटपुट प्रोड्यूस किया वो फाइनल आउटपुट हुआ। तो इस तरह से इन दोनों को कंबाइन करके ये एक इनपुट हुआ और ये आउटपुट हुआ, और इस तरह से दोनों को मिलाने से एक मशीन मिला गॉफ मशीन और गॉफ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू सी। इसको हम प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन एग्जाम्पल डिस्कस करने से पहले एक और बात ध्यान देना है कि अगर कभी गॉफ फंक्शन डिफाइंड होगा, तो गॉफ फंक्शन को डिफाइन होने के लिए ये ध्यान से समझना
कि f का जो आउटपुट है वो f का रेंज होता है। तो f का रेंज डेफिनेटली g के डोमेन का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर f का रेंज g के डोमेन का पार्ट नहीं होगा तो ये फर्दर मशीन में इनपुट एक्सेप्ट करेगा ही नहीं g। तो इसके लिए जरूरी है f का आउटपुट, इट मींस f का रेंज g के डोमेन का पार्ट हो। तो हम यहां पे लिख रहे हैं गॉफ इज डिफाइंड, गॉफ इज डिफाइंड only if, only if range of g, sorry, range of f is subset of domain of g। अगर g का, सॉरी, f का आउटपुट g के डोमेन में प्रेजेंट नहीं हुआ तो डेफिनेट है गॉफ फंक्शन डिफाइन नहीं किया जा सकता। और अगर हम सिमिलरली लिखें fog is defined, fog is defined if range of, range of g is subset of domain of f। एग्जैक्टली exactly। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शन टू और मोर फंक्शन को कंबाइन करने से मिलता है। यहाँ पे हम दो ही फंक्शन लिए हैं सिंप्लिसिटी के लिए, और ट्वेल्थ में हमको जनरली दो फंक्शन का ही मिलेगा। तो f इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू b, g इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम b टू c, देन गॉफ इज ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a टू c। इसका मतलब कि गॉफ एक ऐसा फंक्शन मिला जिसमें इनपुट सबसे पहले f को जाता है, उस f का आउटपुट फिर g को जाता है, और g का आउटपुट उस गॉफ का फाइनल आउटपुट होता है। एक एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। सपोज f इज ए फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम दिस a टू b and g is a function which is defined from b to c. Now we have to find the Goff function for the given two function f and g. तो सिंप्लिसिटी के लिए हम f को एरो डायग्राम से डिनोट कर लेते हैं। This is f which is defined from a, b, and that is another function g which is defined from b to c. Now a to b, it means इसको हम a नाम रख रहे हैं, having element 2, 3, 4 and 5। अब इसमें जो एलिमेंट है this is 3, 4, 5 and 9। अब इस केस में f of 2 is equal to 3, तो f of 2 is equal to 3, it means 2 3 से रिलेटेड होगा। f of 3 is equal to 4, 3 4 से रिलेटेड होगा। f of 4 and f of 5 both is equal to 5, it means f of 4 and f of 5 both is equal to 5। now g3 is equal and g4 both is equal to 7। first write the element of the c, it means 7, 11 and 15। so now g of 3 and g of 4 both is equal to 7, so g of 3 and g of 4 both is equal to 7, and then g of 5 and g of 9 both is equal to 11, g of 5 and g of 9 both is equal to 11। now we have to find the Goff function। so definitely Goff is a function which is defined from a to c, it means here a is just 2, 3, 4, 5 and c having elements that is 7, 11 and 15। तो डेफिनेटली अगर गॉफ फाइंड करना है तो फॉर गॉफ वी हैव टू फाइंड गॉफ फॉर 2, गॉफ फॉर 3, गॉफ फॉर 4 एंड गॉफ ऑफ 5। तो वन बाय वन वी विल फाइंड एवरी टर्म। देन गॉफ ऑफ 2 इज इक्वल टू g of f of 2, then g of f of 2, it means just put the value of f of 2, तो f of 2 it means 2 का 3 से रिलेटेड है, g of 3। now g of 3 तो 3 7 से रिलेटेड है, it means गॉफ of 2 is equal to 7। now again गॉफ of 3 मतलब गॉफ का डोमेन a है एग्जैक्टली, तो हम गॉफ के ईच डोमेन के लिए उसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। तो गॉफ of 3 is equal to g of f of 3। now first write the value of f of 3, it means 3 का इमेज 4 है, तो जस्ट g of 4 और फिर उसके बाद 4 का इमेज g के अंडर में 7 है, तो that is 7। now next one गॉफ of 4, तो गॉफ of 4 it means again g of f of 4। तो first put the value of f of 4, तो f of 4 is equal to 5। now again put the value of g of 5 and g of 5 is equal to here 11।
Now gof of 5, last one, g of f of 5. So now put the value of f of 5. Now f of 5 is equal to 5 again, and g of 5 is equal to 11. So finally we have calculated all the values of gof for x is equal to 2, x is equal to 3, x is equal to 4, and x is equal to 5. So then finally we will write the gof function. Gof is a function which is defined from a to c. It means 2, 3, 4, 5, 2. C, it means 7, 11, and 15. Such that gof of 2 and gof of 3 is equal to 7. Gof of 2 and gof of 3 is equal to 7, and gof of 4 and gof of 5 is equal to 11. Gof of 4 and gof of 5 इज इक्वल टू 11. तो एग्जैक्टली इस तरह से हम लोग दो गिवन फंक्शन के हेल्प से उसका कंपोजिट फंक्शन गॉफ फाइंड करना सीखे. तो अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. अगेन देयर इज टू फंक्शन f and g. F is a function defined from R to R such that f of x is equal to cos x, and g is a function defined from R to R, g of x is equal to 3x square. We have to find gof and fog, and finally we have to show that gof is not equal to fog. So first we will find gof. For gof of x, this can be written as g of f of x. So then g of f of x, put the value of f of x, that is equal to g of cos of x. So now g of x is equal to 3x square. So now g of cos of x can be written as 3 into cos x the whole square. Just put cos x in place of x here. So that will be 3 into cos x the whole square. It means 3 cos square x. So now this is gof of x. Again we will find fog of x. So for fog of x, first the input goes to the function g. It means that is f of g of x. Then just put the value of g of x is equal to 3x square. Now f of x is equal to cos x, then definitely f of 3x square is equal to cos of 3x square. It means just replace x by 3x square. So this is equal to cos of 3x square. So now these two term is definitely not equal. So gof of x is not equal to fog of x, or gof is not equal to fog.